आज मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको एक बार सुनकर तो ऐसा लगेगा यस दिस थिंग इज डिफरेंट, समहाउ डिफरेंट। इज इट ओके? तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने कंप्लीट किया था दैट इज अबाउट व्हाट? दैट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन। अब हर एक रिफ्लेक्शन क्या था? रास्ता, एक तरह का चलने का तरीका। इट्स द वे हाउ द लाइट ट्रेवल्स। लाइट ट्रेवल कर रही थी, डुअल नेचर हमने पढ़ा था लाइट के बारे में कि लाइट डुअल नेचर से ट्रेवल करती है। और ये क्या था? ये लाइट का एक तरह से रिएक्शन था जब भी किसी ऑब्जेक्ट से वो टकराती थी तब। तो हर एक व्यक्ति का जब रिएक्शन होता है तो वो फिक्स टाइप के होते हैं कुछ कुछ। जैसे जब कोई गुस्सा होता है तो एक फिक्स टाइप के एटीट्यूड शो करते हैं। सिमिलरली यहां पे लाइट भी जब किसी चीज से टकराता है तो वो फिक्स टाइप ऑफ एटीट्यूड शो करता है। दैट एटीट्यूड इज नोन एज व्हाट? दैट attitude is known as laws of reflection. That attitude is known as what? That attitude is known as laws of reflection. It means here you can say that we are going to study about the what? About the attitude of light when it strikes some object. मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना चाहूंगा और वो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं उन टर्म्स को डिस्कस कर लेता हूं, देन आफ्टर हम क्या करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जानेंगे। इज इट ओके? चलिए, तो उन टर्म के बीच में जो सबसे पहला टर्म आता है, द फर्स्ट टर्म इज दैट द फर्स्ट टर्म इज इंसिडेंट रे। दैट इज इंसिडेंट रे। आफ्टर दैट reflecting surface, and next one is reflected ray, and after that angle of incidence, okay, and angle of reflection। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इज इट ओके? और इन टर्म्स को डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा आपके माइंड को विजुअलाइज करना चाहूंगा, और विजुअलाइज करने के लिए मैं आपके लिए कुछ लाया। देखिए, दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज अ ओल्ड डस्टर। एक बहुत पुराना डस्टर था जिसका मैंने यूटिलाइज किया है। सपोज दैट दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, आप ऐसे समझिए कि ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर मान सकते हैं, एनीथिंग यू कुड जस्ट गेस, एनीथिंग, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इफ दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड वी ड्रॉ और इमेजिन, जस्ट थिंक आउट अ परपेंडिकुलर लाइन to the surface. This one is what? A perpendicular line to the surface. Is it okay? This perpendicular line to the surface is known as what? This is known as normal. This is called what? This is called the normal. It means I have one more point, that is what? That is normal. Okay? Then simply what is normal? Normal is a imaginary line which is perpendicular to what? Which is perpendicular to the surface. Which surface? Reflecting surface. This one is the reflecting surface. The first term is completed. That is what? The reflecting surface. We have discussed this term, reflecting surface. This is the reflecting. Which one is the reflecting surface? This one is the reflecting. What is the normal? The perpendicular line, the imaginary perpendicular line to the surface of what? To the surface of reflecting. Yani it means to the on the reflecting surface. Is it okay? This 2 point is discussed. Now incident ray. A ray of light coming from the source. What? A ray of light coming from the source. From anywhere. Source. Coming from the source. And strikes the reflecting surface. Is known as is known as incident ray. What is known as incident ray? We have discussed this point also. This is also known as what? This is incident ray.
normal, this one is the incident ray, and after reflection, the ray of light which goes away from the surface, is called what? Is called reflected ray. It means we have discussed again what? We have discussed about reflected ray. Now it's a time to discuss angle of incidence. What is angle of incidence? The angle formed between the incident ray and the normal. The angle formed between the incident and the normal is called what? It's called angle of incidence. It's called angle of incidence. And what is angle of reflection? The angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. Is it okay? I think now all these terms are clear to you. Now all these terms are clear. Okay? One more thing I want to add you. This normal is perpendicular to the surface of what? To the reflecting surface. This normal is perpendicular to the reflecting surface, and it should also lie at the point of incidence. It means what? It also lie at the point of incidence. It means it should be drawn perpendicular to the reflecting surface, but at which point? At the point of incidence. It means where the incident ray strikes the surface. जहां incident ray surface से आके टकराएगी, उसी point पे हमें ये line perpendicular खींचनी है. Is it okay? This is called the normal. Done? दोबारा इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब तक हम पहले लॉ जान लेते हैं. तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया ये सभी टर्मिनोलॉजीज जो टर्म्स थे वो. अब हम आते हैं लॉ के ऊपर. हमारा सबसे पहला लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. आई थिंक इंसिडेंट रे आपको पता चल गया, नॉर्मल पता चल गया, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दैट इज नॉट दिस प्लेन, दिस इज नॉट दैट प्लेन. आप इस प्लेन को मत समझिए, दोबारा मैं बता रहा हूं, देख लीजिए. Suppose this one is the incident ray, this one is the reflected ray, and this one is the normal. This one is the reflecting surface, not that plane. Which one is the that plane? That plane is this part. This is that plane. Is it okay? It means incident ray, reflected ray, and normal all lie on a same plane. And look. Incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane, and that plane is which one? That plane is this one, this back of the plane. Is it okay? This one is the plane exactly, not this one. This one is the reflecting surface, this one is not the plane. This one is the plane. Done? Incident ray, reflected ray and normal lie on a same plane. This one is the first law. Now we come on second law. Second law tells us that angle of incidence is equals to angle of reflection. This one is the angle of incidence is equals to angle of reflection. Both of these angles are equal. Is it okay? Both of these angles are equal. This angle is represented by I, angle of incidence is represented by I, and the angle of reflection is represented by R. In this video session we have discussed about what? About the laws of reflection. Hope you understood these. Thank you.